morning student. Today we will discuss about prokaryotic and eukaryotic cell. On the basis of evolution and structure of nucleus, there are basically two types of cell. Evolution के basis पे, that is the complexity in the cell structure and internal organization of cell, इनके basis पे जो cell होते हैं वो two types के होते हैं, that is prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cells, pro means first formed or you can say before or also that primitive, and karyon means nucleus, that are the cells that don't have true nucleus or specific membrane bound nucleus. And eukaryotic cell, eu means true and karyotic means nucleus, that are the cells with the true nucleus. All the higher kingdoms come under the eukaryotes, that is protista, fungi, plantae, animalia. आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में स्टडी किया होगा, रॉबर्ट विटेकर ने दिया था, जिसके अकॉर्डिंग जो 5 किंगडम्स थी वो क्या थे? फर्स्ट किंगडम मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया. So basically bacteria come under prokaryotes and animals and plants come under eukaryotes. Now we will discuss some of the basic differences between prokaryotic cell and eukaryotic cell. First one, which we already know, which we have discussed, that is cells don't have true nucleus and specific membrane bound nucleus in prokaryotes, and in eukaryotes they have true nucleus, they have membrane bound organelles. In prokaryotic cell, the cell is without compartmentalization. Now what it mean? Actually all the cell components they lie scattered within the cell. जितने भी cell components हैं वो scattered होते हैं cell के अंदर, because अलग से कोई भी cell organelle के around कोई membrane bound organelle present ही नहीं है, इसलिए क्या है इसके अंदर जो cell components हैं they lie scattered. Whereas in eukaryotes complete compartmentalization is seen because यहाँ पे membrane bound organelles present हैं. Plant and animal cells come under the eukaryotic cell. Now what is the basic difference between plant cell and animal cell? In plant cell, cell wall is present, and in animal cell wall is absent. Plastids and a large central vacuole are also present in plant cell, whereas they are absent in animal cell. On the other hand, animal cell have centrioles which are absent in almost all plant cells. So these are some of the basic difference between plant cell and animal cell. Eukaryotic cells possesses an organized nucleus with the nuclear envelope. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeleton structures. Their genetic material is organized into chromosome, whereas no such things are seen in prokaryotic organism. They are without any nucleus, or we can say that they are without any organized nucleus. Everything is scattered and no organelles like those present in eukaryotes are present in prokaryotes. Now we will discuss about prokaryotic cell in detail. These are the cells which are without any nucleus or without any well-defined nucleus, which we have already studied. Membrane bound organelles are absent. Cell compartmentalization is absent. Cell is not divided into compartments. That means yani everything is scattered inside the cytoplasm. Membrane bound nucleus is also absent, whereas in eukaryote cell nucleus is surrounded by nuclear membrane and inside it genetic material is present. In prokaryote also genetic material is present, but it is scattered. Hence prokaryotes have a cell wall surrounding a cell membrane. Fluid matrix filling the cell is cytoplasm. Fluid matrix को हम क्या बोलेंगे? cytoplasm. No well defined nucleus. well defined nucleus नहीं है. cytoplasm present है. cell wall भी present है cell membrane के around. genetic material is naked, that is it's not enveloped by the nuclear membrane. Now next we discuss about shapes of prokaryotic cell. Prokaryotic cell exist in variety of shape. They may be coccus, bacillus, spiral shape, coma shape. The coma shape is also termed as vibrio. Spiral shape, spirillum, bacillus, these are rod shaped bacteria, and coccus, these are spherical shaped bacteria. Most of the bacteria come under bacillus or bacilli. They are rod shaped bacteria.
and the most common example of this is E. coli or Escherichia coli. Now we will study about structure of prokaryotic cell. Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior, and we will study it under the following headings. That is, first we will discuss about cell envelope, secondly cytoplasm, then about genetic material, ribosome, inclusion bodies, pili, flagella. Bacterial cell or the prokaryotic cell has a chemical complex cell envelope. The cell envelope consists of three layered structure. Outermost is glycocalyx, second is cell wall, and third is cell membrane. Whereas in eukaryotic cell, the cell membrane, which is common to both plant and animal cell, and cell wall is present only in plant cell. यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें एक एडिशनल स्ट्रक्चर होती है सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती. The outer layer is made up of glycocalyx. As the name suggests, glyco means glucose. That is, it is composed of carbohydrate. That's why we said glycocalyx. Glycocalyx differs in composition and thickness among different bacteria. They can be loose sheath. They can be in the form of loose sheath, and then we will call it as a slime layer, and they can be tough and thick, then we will call it as a capsule. They protect the bacteria from other organism. देखिए डायग्राम के अंदर आपको फर्स्ट चीज़ दी हुई है कैप्सूल, सेकेंड लेयर दी हुई है सेल वॉल और थर्ड सेल मेम्ब्रेन. तो ये कंप्लीट तीनों स्ट्रक्चर मिलके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करेंगी, और इसको हम बोल रहे हैं सेल एनवल्प. और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को फ्रॉम WBC एंड ऑल्सो हेल्प इन कॉलोनी फॉर्मेशन. सेल वॉल, इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर कवरिंग एंड इट इज़ strong due to peptidoglycan. It is similar as those of eukaryotes. It determines the shape of cell. अब cell wall का main function क्या होता है, ये cell की shape को determine करेगी, and it provide a strong structural support to the cell. Bacteria can be classified into two groups on the basis of difference in cell envelope. Cell envelope के difference के basis पे हम bacteria को two groups में divide करते हैं, and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram. Gram एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने टेक्निक डेवलप की थी ऑफ स्टेनिंग बैक्टीरिया, एंड इसको हम बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग. डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन टू ग्राम स्टेनिंग, बैक्टीरिया हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. ग्राम स्टेनिंग पे के बेसिस पे उस पर क्या रिएक्शन शो कर रहे हैं बैक्टीरिया, इसके बेसिस पे हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं इन्हें, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. In gram-positive bacteria, cell wall is single-layered and thick. In gram-negative bacteria, cell wall is double-layer, and those that take up the gram stain will be termed as gram-positive, and those which will not take the stain, that will be gram-negative. And in gram-positive, they will retain the gram stain even after washing in organic solvent. Whereas gram-negative bacteria, after washing in organic solvent, they drains away the stain. Cell membrane or plasma membrane. It lies below the cell wall and covers the cytoplasm on its outside. Plasma membrane or plasma lemma lacks cholesterol-like sterols of eukaryotic membrane. Bacterial cell membrane is made up of lipoprotein like that of eukaryotic membrane. It is selectively permeable in nature, similar in structure to eukaryote. We will discuss in detail in eukaryotes. Some infoldings are also present of these plasma membrane, and that is termed as mesosome. So mesosome is a unique character to prokaryotes. They are found by the extensions of cell membranes or the infoldings of cell membrane. Now, what are the function of mesosome? Mesosomes helps in cell wall formation, they help in DNA replication, they also help in respiration and secretion process. Here in prokaryotes we don't have separate organelles like those present in eukaryotes. जैसे eukaryotes के अंदर organelles present है, वैसे prokaryotes के अंदर present नहीं है. तो जो ये mesosome है ये सारी activities करेगा जो eukaryotes के अंदर different organelles कर रहे थे. जैसे कि मैंने अभी बोला they help in respiration, तो वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प कर रहा है, लेकिन यहाँ बैक्टीरियल सेल में कौन हेल्प करेगा, मीजोसोम.
सिक्रीशन की प्रोसेस वहाँ पे गोल्जी बॉडी कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कौन करेगा? मीजोसोम. सो दीज आर फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर्स that will help in cellular respiration, and other possible functions are secretory activity, storage of enzymes, and increasing membrane area. Hence these three layers, glycocalyx, cell wall and cell membrane, they forms the outer cell envelope, and they will act together as a single protective unit. Now secondly, we will discuss about cytoplasm. The fluid filled space within the cell membrane is termed as cytoplasm. In bacterial cytoplasm, membrane bound cell organelles like mitochondria, chloroplast, lysosome, Golgi body, microbodies, etc. are absent, and they show no streaming or cyclosis movement. They contain enzymes, cell components, and organic molecules. Various components of cytoplasm are like ribosome, inclusion bodies, food reserve, inorganic granules, gas vacuoles, photosynthetic pigments. Genetic material. Single or circular DNA is the genetic material. It is scattered in the cytoplasm. As you can see that small round bodies, small circular bodies are present, and there is a dense structure also present in the cytoplasm. Where this dense structure is present, it is termed as nucleoid or nuclear body. It is also called genophore. As typical nucleus is absent in bacteria, they are prokaryotic, which we have already discussed from where we started, that typical nucleus or the well organized nucleus is absent in bacteria, and the genetic material is single molecule of double stranded DNA. Nuclear membrane and nucleolus are absent, and beside the main DNA, another small and double stranded circular DNA is also present in bacterial cell, which is called plasmid. Main DNA के अलावा एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल में, जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं. ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है. और ये करता क्या है प्लाज्मिड? इट हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली. It carry genes and it also help in reproduction. Now next, ribosome. 70s type of ribosomes are present in the cytoplasm, and the main function of ribosome is protein synthesis. Inclusion bodies are also present, and these structures are also, they are not membrane bound. They store some kind of reserve material. Bacterial cell wall is covered by numerous hair-like structures called villi. कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल सरफेस पे, जिसे हम पिल्लाई बोलते हैं. दे आर स्मॉलर देन द फ्लैजिला. दे आर फॉर्म फ्रॉम पिलिन प्रोटीन and they help in conjugation. They are absent in recipient bacteria or female. They do not play any role in motility. Now we will discuss about motility in bacteria. Bacteria can be motile as well as non-motile, and the movement in bacteria take place by means of flagella. जो flagella present होते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पे, ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की मोटिलिटी या मूवमेंट के लिए. These are actually filamentous extensions from their cell walls. अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, दैट मीन्स फ्लैजिला प्रेजेंट है. फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. जो फिलामेंट है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है और बना हुआ है फ्लैजिलिन प्रोटीन से. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड. Hook, it connects basal body to filament. Its some part lies within cell wall. Basal body, it's the basal part of flagellum. It's rod shaped in structure and it lies within cell wall and cell membrane. Summing up with this diagram, see here flagella is present. What will the function of flagella? It will bring about movement. ठीक है, मोटिलिटी प्रोवाइड करवाएगा ये. पिल्लाई प्रेजेंट है, वो क्या कर रहे हैं? इट एनेबल अटैचमेंट टू सरफेस एंड अदर बैक्टीरिया. ये अटैचमेंट में हेल्प करेंगे. साइटोप्लाज्म, इट्स द साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ लाइफ. जितने भी केमिकल रिएक्शंस है वो कहाँ पे होंगी? साइटोप्लाज्म में. मीजोसोम, ये हमने पढ़ा था कि ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं. ये फंक्शन करेगी सेलुलर रेस्पिरेशन का और सिक्रीशन का. जितने भी एक्टिविटीज़ हैं जो यूकैरियोट्स में अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स कर रहे थे, वो सब फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? यहाँ पे मीजोसोम.
राइबोसोम प्रेजेंट है, 70 इस टाइप के राइबोसोम होते हैं और इनका मेन काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का। कि जो न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती और इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड या न्यूक्लियर बॉडी। जेनेटिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट है। सेल वॉल, मेन फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम रप्चरिंग एंड अदर ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल्स का मेन काम क्या है, मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, प्रोवाइड शेप टू द सेल और प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द रप्चरिंग एंड अदर ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बैरियर की तरह एक्ट करेगी, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी जैसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। इसमें फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट है, फूड ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, रिजर्व फूड मटेरियल भी प्रेजेंट है, इंक्लूशन बॉडीज़ की फॉर्म में। प्लाज्मिड ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स है, इसकी एप्लीकेशन जो है वो बायोटेक में होती है। तो इस पूरी पिक्चर में हमने देखा बहुत सारे पार्ट्स को जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और इनके फंक्शंस भी। और ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट होती है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स। जितने भी यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।